Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Testbook Super Coaching. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हैं and you're all ready to embrace the hustle on 6th of December. Of course, आपका Monday और Tuesday को महा मैराथन होगा जिसमें हम लोग आपकी जो 10 यूनिट्स हैं उनको एग्जॉस्टिवली रिवाइज करेंगे. However, I highly recommend कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अच्छी तरह से अपने नोट्स को दोबारा से रिवाइज कीजिए बिकॉज यू नो इट बेटर. आपने क्या क्या स्टडीज की गई हैं, आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता है कि कौन से टॉपिक्स आपने अच्छी तरह से करे हैं या नहीं करे हैं. सो वन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस वुड बी जितना ज्यादा हो सके आप अपने नोट्स को गो थ्रू कीजिए, जितना ज्यादा हो सके प्रॉपरली एग्जॉस्टिवली उनको अच्छी तरह से रिव्यू कीजिए बिकॉज द पावर ऑफ योर ओन नोट्स is actually going to be something that'll be better than any other resource at this particular juncture. ठीक है, देरी नहीं करते हुए let's just very quickly get started. मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी आज because I really want all of you to focus on self study. क्योंकि अगर इस टाइम पर आप लोग सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे then it's going to be really difficult for you to actually score good marks. And I hope आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस में पेपर वन को नहीं भूल गए होंगे. पेपर वन is not forgotten and you are revising paper one. Fine. Good evening Himanshi, Shenbaga ने कल आई थिंक टेक्निकल इशू हो गया था. दैट इज द रीजन वी रीस्केड्यूल कल की क्लास टू टुडे. बट Shenbaga was actually one of the first people to tell me कि ये डाउट है. I'll also share it on the Telegram platform so that all of you are updated about it. और काफी सारे इंटरेस्टिंग और नए डेवलपमेंट्स भी आने वाले हैं. सो यू विल ऑलवेज हैव टू डेफिनेटली बी staying tuned all together. आ नहीं रहा है, one second. Will be updating and I think yeah it's been delivered. Okay, it's been delivered. So let's further without further ado let's just very quickly get started. आज के क्वेश्चन से जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम रिविजन का भी मिलेगा. गुड इवनिंग शैनबागा, प्रज्ञा, तहसीन, देवशीष, सामर, सुप्रतम, हैंसबर्ग, विशाल, डोमिनेटर. ओके, all right, let's very quickly get started. Let's very quickly get started with today's session. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है बिकॉज वी आर गोइंग टू बी रिवाइजिंग. आपको सारी की सारी डिटेल्स ऑफ कोर्स यस आई मिस यू टू हिमांशी. आई मिस यू टू राइट. आई वाज लॉगिंग इन बट आई थिंक कोई टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से वी कुडंट रियली कंटिन्यू. ओके, प्लीज फील फ्री टू स्टे कनेक्टेड बाय टेलीग्राम. आप जस्ट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू गेटिंग कनेक्टेड क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी आने वाले हैं. So we really need to be keeping in touch and making sure कि bullseye की तरह we are preparing for the June 2024 attempt as well. Okay, all right, and of course our wishes are always with you, our blessings are always with you. We really want to hear good news. That's always our priority, so that really goes unsaid. I will also change my position so that you'll all be able to see the questions that will be coming your way. ठीक है, so जल्दी से I'll also change this. Okay. Anyway, so let's very quickly get started. जल्दी से एक बार इसको स्टार्ट कर देते हैं. Alright. Okay. I hope आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने करवाए थे उनको रिवाइज कर लिया होगा. Small little things जैसे आज क्लासरूम क्लास में when we were looking at poetry at 8 o'clock and 9:30 p.m. तो हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे एक्मेism हो गया या हम लोग क्रिस्टोबल बाय कोलरिज हो गया, उसमें गिराल्डीन का कैरेक्टर की लाइन्स. तो छोटी छोटी चीजें जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक जूलिया क्रिस्टेवा जैसे कहती है इंटरटेक्सुअलिटी को यूज नहीं करेंगे, इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट. ठीक है, तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके आप रिवाइज कीजिएगा. दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर इट वेरी क्विकली. हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ओकेजनल डिस्कोर्स? ये कौन है? हु व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर? हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ओकेजनल डिस्कोर्स ऑन द नीग्रो क्वेश्चन? ओकेजनल डिस्कोर्स ऑन द नीग्रो क्वेश्चन ये किसने लिखा है? Who's writing this particular work in 1849? 1849 में कौन लिख रहा है? आपको वेरी गुड, कार्लाइल इज राइट आंसर. तो इसके साथ साथ आप क्या क्या चीजें याद रख सकते हो? इसके साथ साथ आप अदर नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर्स को याद रख सकते हो. राइट, यू कैन एक्चुअली रिमेंबर अदर नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर्स. याद है कल जब हम क्रिटिसिज्म को रिवाइज कर रहे थे क्लासरूम क्लास में, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट ऑन द सबलाइम में? लोंगाइनस क्या कह रहा था? द साइंटिफिक मेथड ऑफ फिगरिंग आउट हाउ अ वर्क कैन बी सबलाइम. राइट, या फिर आपका कैचेस क्या कह रहा है? Similarly, Arnold, who's coming during the same time period as Carlyle,
या आपके अदर मूवमेंट्स जैसे अगर 1849 में यू आर एबल टू सी दैट दिस इज द वर्क दैट कार्लाइल इज प्रोड्यूसिंग, 1848 एक साल पहले आपका चार्टिज्म मूवमेंट आ रहा है. सो कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिव्यूइंग, क्योंकि जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू रिवाइज, दैट इज गोइंग टू बी द क्रक्स ऑफ इट. सो कार्लाइल जो है ही इज राइटिंग ओकेजनल डिस्कोर्स ऑन द नीग्रो क्वेश्चन दैट यू आर एबल टू सी. यहाँ पर अदर वर्क्स को भी याद रखना, जैसे आज हम लोग जो क्वेश्चन पोएट्री में कर रहे थे, रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट हॉलो मैन, वी वर टॉकिंग अबाउट हॉलो मैन का एपिटाफ, राइट. सो हॉलो मैन, मिस्टर कर्ट ही डेड, तो वो कहाँ से आ रहा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल हैव टू रिमेंबर. या फिर याद है जो हम लोगों ने अभी आज क्वेश्चन किया था, सेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, गिरोनशीन से ऑल द वे एश वेंसडे, द कन्वर्जन पोएम, राइट. दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. या फिर द पोएम्स दैट वी वर लुकिंग अप, रुडयार्ड किपलिंग. तो ये सब आपका सही होना चाहिए. You shouldn't be going wrong with any of these questions altogether. Fine. Very good, Supratim. That's absolutely right, बच्चे. That's absolutely right. Okay, moving on to the next question. जल्दी से, आज बहुत crisp मैंने रखा है. Not try to keep it very long and very elongated. लेकिन Monday को आपका मेगा क्लास होगा, तो please make sure that Monday you're joining at 10:30 p.m. All the questions are being collated. So उसको अच्छी तरह से definitely do make sure that you're attending. What was the name of the sugarcane plantation where the protagonist lived in Andrea Levy's historical novel The Long Song? The Long Song. क्या नाम है उसका? Good evening, Lichi. Good evening, बच्चे. Good evening. What is the correct answer? Aksha Sudhas got the right answer. Amity is absolutely the right answer, right? आपका यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाता है? What is the right answer that you're able to see? Amity is absolutely the right answer that you're able to get. So the long song historical novel जो कि Andrea Levy ने लिखी है, it also received the Walter Scott Prize altogether. And this is a memoir by an elderly Jamaican woman. अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन क्या किया था? अभी अभी रिमेंबर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ओमेरोस बाय डेरिक वॉलकॉट, व्हिच इज टेलिंग यू अबाउट Hector is also there, Achilles is also there. तो वो कहाँ पर सेट है? It's set in Saint Lucia. अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था क्लासरूम क्लास में भी, if you remember. So please make sure that you are reviewing, क्योंकि जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे things are going to be very complicated. ठीक है? Elderly Jamaican woman living in early 19th century Jamaica during the final years of slavery. आपका मॉडर्न गॉथिक लिटरेचर में बिलवेड इज आल्सो टॉकिंग अबाउट स्लेवरी, द फ्लाइट ऑफ स्लेवरी. अफ्रो अमेरिकन राइटिंग स्लेवरी के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड ये जो यंग स्लेव गर्ल है जुलाई, वेयर इज शी लिविंग? शी इज लिविंग इन एमिटी. एमिटी इज द नेम ऑफ द शुगर कैन प्लांटेशन. ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे फॉर इंस्टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैंसफील्ड पार्क बाय जेन ऑस्टन, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है जेन ऑस्टन, थॉमस हार्डी, ये आपके ऐसे 19th वॉल्टर स्कॉट, या आपके ऐसे 19th सेंचुरी नॉवेलिस्ट हैं. इवन दो वॉल्टर स्कॉट और जेन ऑस्टन आपका रीजेंसी इंग्लैंड पीरियड में लिख रहे हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डू गेट क्वेश्चंस कमिंग ऑन देम. उल्टा 19th सेंचुरी नॉवेल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च है. सो यू विल हैव टू रिमेंबर मैंसफील्ड पार्क में पैसा कहाँ से आ रहा है? इट्स कमिंग फ्रॉम द कॉलोनियल मनी दैट यू आर एबल टू सी, राइट. और ये भी हम आपको बोलते हैं कि हाउ डू यू डिफाइन द विक्टोरियन एज? द विक्टोरियन एज इज ब्यूटिफुली समड अप एज द एज ऑफ टर्ब्यूलेंस, द एज ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड द एज ऑफ स्केप्टिसिज्म. पहले टर्ब्यूलेंस हो रहा है चार्टिस्ट मूवमेंट के फॉर्म पे, वर्किंग क्लास रिवॉल्ट के फॉर्म पे, मार्क्सिज्म के फॉर्म पे, फिर इकोनॉमिक एक्सपेंशन, द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 दैट यू आर एबल टू सी, एंड फाइनली आपका स्केप्टिसिज्म. पीपल लाइक कॉनराड दे आर क्वेश्चनिंग, और इवन हार्डी फॉर दैट मैटर. तो पेसिमिस्टिक लिटरेचर आपका बढ़ता जा रहा है. दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. सो कनेक्शन बनाइए, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. गुड इवनिंग अजीज, गुड इवनिंग. So please remember what is the name of the sugarcane plantation. It is Amity over here in Andrea Levy's work. Okay, the long song. Moving on to the next question. On theatre, selected essays was authored by which of the following Indian playwrights? Which of the following Indian playwrights? यहाँ पे what is the correct answer, everyone? What becomes the correct answer? On theatre selected essays, Indian drama, Indian poetry, ये आपको टॉपिक्स करने पड़ेंगे. उल्टा अभी जो जून बैच का आपका पूरा का पूरा लेक्चर नोट्स बन रहा है, करिकुलम बन रहा है, पीपीटीज बन रही हैं,
उसमें इंडियन लिटरेचर में हम लोगों ने इंडियन एस्थेटिक्स को डाला है, बिकॉज इंडियन एस्थेटिक्स देयर इज नो एस्केपिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीकैनोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, as we are able to see. What is the correct answer here? Badal Sarkar is absolutely right. बादल सरकार is absolutely the right answer. बादल सरकार आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर. बादल सरकार is writing this particular piece of work. Okay, this is very important. Okay, Ashok का एक दिन, a three-act Indian play by Mohan Rakesh is centered on which of the following Indian literary personalities? Ashok का एक दिन जो है, whose life is it actually is it showing? Whose life is it showing? Ashok का एक दिन. So what are you able to see? Ashok Ka Ek Din. Ashok Ka Ek Din, a three-act Indian play by Mohan Rakesh. It is centered around which of the following personalities that you're able to see? Good evening, Sonali. Good evening, Bache. Good evening. It is centered around कालिदासा's life. ठीक है, ये किसके लाइफ पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कालिदासा's life. सो अशोक का एक दिन जो है ये किसके ऊपर आ रहा है? व्हाट इज इट बेस्ड ऑन? एंड मोहन राकेश का आधे अधूरे, रिमेंबर आधे अधूरे became a work that was representing Indian existentialism in drama, और also the first important example of reading against the grain. मोहन राकेश दिखाना चाह रहे थे कि एक फैमिली जहाँ पे महिला जाएंगी, काम करेंगी, वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी, बट उल्टा क्या हुआ? Everybody started thinking, look at this woman, she's having so many problems, because her husband is not fulfilling her, therefore she's going ahead and having an adulterous relationship. तो लोगों ने against the grain ही read कर लिया, आधे अधूरे halfway house जो बोला जाता है. So यहाँ पर what are you able to see? You are able to see कि ये जो आ रहा है आपका वर्क अशक का एक दिन, ये कितने एक्ट्स में डिवाइडेड है? 3-act प्ले. अब कल हम लोगों ने जो क्लासरूम क्लास में ऑन द सबलाइन कर रहे थे बाय लॉन्गाइनस, या फिर इवन हॉरिस जब हम बोल रहे थे हॉरिस के व्यूज ऑन ड्रामा क्या है, ड्रामा हैज टू बी 5 एक्ट्स, वो क्लासिकल टाइम पे है. So we are able to see experimentation in the 20th century. So the 3-act play है which is centered around Kalidasa's life altogether, and in the first act itself we are able to see, he's leading a very nice happy life in the Himalayan village. He's also involved with Malika, ठीक है, but he has to appear before King Chandragupta II's court, right? In far off Ujjaini, and यहाँ पर he's very happy in the utopian state that he is, right? However he has to achieve greatness. इसको आप compare करो Achilles के. Achilles can live a simple life, लेकिन क्योंकि Patroclus उसके फ्रेंड को मार दिया गया है by Hector, he is coming back again. Thetis उसकी मदर आती भी है, वो बोलती है, do you want to have a simple long life or do you want to die early and be famous? तभी हम कहते हैं Iliad is dealing with the virtue of Kleos, that is glory. That is what you're able to see. ठीक है, he finally of course leaves for Ujjain. या Aeneas का भी तो यही होता है, Aeneas भी तो Dido को छोड़ के चला जाता है. So you have to compare. These are your moments of intertextuality which will build your fundas all together, और आप automatically, because remember when you're clearing it, you're trying to become a research scholar and also an assistant associate professor. तो आगे information पूरी grip में होनी चाहिए. Good evening पूजा बच्चे. He leaves to Ujjaini, is conflicted state of mind में है, and in the second act जो है Kalidasa has achieved fame. He's married to a sophisticated noble woman. She's of course coming. अब इसको compare करो जैसे संस्कारा से भी, चंद्री का जो कैरेक्टर है, right, वो outcast है, it's not a part of what is considered to be gentry. ठीक है, well Malika's heart broken alone, Dido भी तो heart broken थी, right? You can make the comparisons all together. You are absolutely able to make the comparisons over here, that how the character of Malika was heartbroken. Dido Queen of Carthage को भी तो ऐसा ही कर दिया था. Dido Queen of Carthage को भी तो Aeneas ने यही काम कर दिया था ना. That is what you were able to see. Okay. Now of course Malika with the mother Ambika is dead, is now of course married and has this daughter Bloom, and how the story actually continues. So Ashok Ka Ek Din by Mohan Rakesh is taking Kalidasa's story, Kalidasa being torn between duty and love, but he lives, he leaves, and that is how the story progresses. Okay, even Antony and Cleopatra, Antony also had the call of duty, by the way. Okay, which of the following plays by Girish Kanad? मैं क्लासरूम बच्चों को भी यही कह रही थी, जैसे आप में से कुछ लोग, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग श्वेता पद्मा, ठीक है, आप लोग कुछ लोग जैसे अगर जून अटेम्प्ट या और सब्सिक्वेंट एग्जाम्स जैसे गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस जब आपको मिलते हैं ना, इनकी प्लीज अच्छे से लेक्चर नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए. दैट्स अ हाई इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी. ठीक है, which of the following plays by Girish Kanad is based on an episode in the Mahabharata? It is based on an episode in Mahabharata.
ये आपका बेस्ड है ऑन एन एपिसोड इन द महाभारता. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? व्हाट इज वेरी गुड, ययाति. ययाति इज द राइट आंसर. सो ययाति इज द फर्स्ट प्ले जो आपका आ रहा है. इट आल्सो गॉट द मैसूर स्टेट अवार्ड बाय द वे, एंड इट इज बेस्ड ऑन द महाभारता, जहां पर ययाति इज द एंसेस्टर ऑफ पांडवास, इज गिवन द कर्स ऑफ प्रीमैच्योर ओल्ड एज बाय हिज फादर इन लॉ, राइट. एंड ये फादर इन लॉ कौन है? ये शुक्राचार्य हैं, because Shukracharya is not happy with the infidelity of Yayati. Yayati could redeem this curse only if someone was willing to exchange the youth for him. और इनका जो बेटा है पुरु, पुरु says, okay father, I do it for you. ठीक है. So you know the crisis that Puru's decision sparks, right? तो ये आ जाता है. पुरु की young wife, she's like, what are you even doing? So Yayati is taking that episode from Mahabharata, right? अशक का एक दिन मोहन राकेश कालिदासा की लाइफ बता रहा है. मलिका का कैरेक्टर है. व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट दैट ही इज अंडरगोइंग. तो कीप ऑन रिव्यूइंग, कीप ऑन मेकिंग अ माइंड मैप. दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट. ये नहीं है कि एक क्वेश्चन किया, भाई काम हो गया, आता है नहीं आता है, नहीं. ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, कैटेगराइजेशन है. उल्टा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करना इटसेल्फ इज अ वेरी कम्बसम प्रोसेस. आपके लेक्चर नोट्स कैसे बनते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. महेश दत्तानी's play Bravely Fought the Queen is divided into 3 acts. Identify which is not a part. You have to identify which is not a part. Bravely Fought the Queen. So ये जो मोहन राकेश का वर्क है, Bravely Fought the Queen, Bravely Fought the Queen, ये 3 acts में divided है. इनमें से कौन सा is not a part of the act? इसमें से कौन सा is not a part of the act? Consta is not a part of the act. Consta is not a part of the act. Quickly tell us. Absolutely right. World, woman in man's world is not a part. Women hai, men hai, free for all hai. Right? All of these are definitely there. Bravely Fought the Queen. Mahesh Dattani again. जैसे आपका Salman Rushdie is the epicenter of a novel, changing the way that novels were written. Mahesh Dattani is a very important intersection in Indian drama. You see a new vibrant change with the advent of Mahesh Dattani's play. So Bravely Fought the Queen ये divided है 3 parts में, women, men and free for all. ठीक है. And what are you able to see? Women का world claustrophobic है. So things haven't really changed. आप देखते हो American writers जैसे केट शोपान ने लिखा है Awakening, telling you the story of Edna Pontellier. Yeah, you are able to see how Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman is coming. ये सारे writers ने जो women का claustrophobia बोला था, things haven't really changed from there. ठीक है. So the claustrophobic female world of Act 1 is actually shown as is pitted against the world of business. ये आपको एक और point क्या याद दिलाता है? एक और point ये दिलाता है that women's realm, right? Women का जो realm था वो कैसे था? So for instance, when you are able to see आपका when you talk about Atya Hussain talks about Zinana as the space of women altogether, or when you're able to see that how you are having your polis is the Greek term for the world of men, the world where men are going and women are actually living back home in the agora. So ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि क्या क्या terms हैं all together, and the character are standing, they're clashing, they're collapsing. Lysistrata also, women are trying to withhold sexual privileges and therefore they want to stop the war altogether. आज अभी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासरूम क्लास में फ्यूटिलिटी पे भी किया था वॉर पोएट्री के अंदर, राइट. सो प्लीज रिमेंबर होम बिकम्स अ साइट ऑफ बैटल. देयर इज ऑब्वियसली अ गैप, देयर इज अ फिशर बिटवीन द वे कल्चर्स आर कमिंग इन ऑल टुगेदर. आप ये भी देखते हो जैसे आपकी डिटर्जेंट्स की एड होती है, विम की एड होती है, हार्पिक की एड होती है, तो उसमें विमेन ही आती है. तो क्यों? सो दैट इज द रीजन पीपल लाइक एरियल दे आर चेंजिंग द इंटायर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, राइट. दैट इज व्हाट यू आर एबल, ये आपके पॉपुलर फिक्शन में भी आता है. Okay, so please keep that in mind. No, Aziz, Zinana is a place where women are actually going, right? It's not associated with men. ओके, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये हम लोग 100th टाइम कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए. सो पोएट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी इज ऑफ 3 kinds. What are the 3 kinds of poetry that Sir Philip Sidney has written? What are the 3 kinds of poetry that Sir Philip Sidney has written? Very good, Devashish Pragya. Religious, philosophical, imaginative. Religious, philosophical, imaginative. Apology for poesy, defense of poesy, Olney or Ponsonby. दो अलग
अलग अलग नाम क्यों दे रखे हैं? दो अलग अलग नाम इसलिए दे रखे हैं बिकॉज पॉन्सॉनबी भी हैं और ओलिनी भी हैं। ये दो पब्लिशर्स हैं, ओलिनी अपॉलजी फॉर पोएसी, डिफेंस ऑफ पोएसी, पॉन्सॉनबी। ठीक है, तो ये दो अलग अलग पब्लिशर्स हैं, इसलिए दो अलग अलग नाम हो जाते हैं आपके पास। ये पोएट्स को वेट्स या प्रॉफिट्स की तरह कंपेयर करते हैं, एंड ही सेज पोएट्री इज बेटर देन फिलोसफी एंड हिस्ट्री एज वेल, right? That is what he's trying to talk about, because poet is the one who will actually make it golden altogether. Which of the following is known as an impressionistic critic? आपका इनमें से कौन सा impressionistic critic है? Very simple question, very simple question. Who's considered an impressionistic critic? इनमें से कौन सा impressionistic critic है? Yes, everyone. What is the correct answer here? Who among the following is considered very good? Walter Pater, who's writing about Renaissance studies altogether. Walter Horatio Pater. वोल्टर पेटर आपका एस्थेटिसिज्म का पूरा जो थ्योरीज है वो दे रहे हैं। इस टॉकिंग अबाउट रेनेसांस ऑल टुगेदर, आर्ट फॉर आर्ट से ये बता रहे हैं। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं अलग हो जाएंगे ट्रट्स्की से। ट्रट्स्की जो 20th सेंचुरी में कह रही है आर्ट हैज टू बी प्रोपेगेंडा, उसके कंप्लीटली अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट? So that is what you're able to see, that you know this is something that comes in. अच्छा, अब यहाँ पर प्लीज याद रखना that you know William Hazlitt also in his essay on genius and common sense ये कह रहे हैं you decide from feeling not from reason, right? That is from impression. तो ये भी इसके बारे में बता रहे हैं. Hazlitt is also trying to put about this aspect altogether. So please keep that in mind. In Biographia Literaria, how many types of imagination Coleridge talks about? How many types of imagination Coleridge is talking about? How many types of imagination Coleridge is talking about? कोलरिज का थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन क्या है बायोग्राफिया लिटरेरिया में? बायोग्राफिया लिटरेरिया में कोलरिज कितनी तरह की इमेजिनेशन के बारे में बताता है? एब्सोल्युटली राइट, ही इज टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, राइट? कितने टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन के बारे में बोल रहा है? टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, कितने तरह की इमेजिनेशन के बारे में ही इज टॉकिंग अबाउट? ही इज टॉकिंग अबाउट प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी सब में है, सेकेंडरी के बारे में बताते हैं। फैंसी एंड इमेजिनेशन में भी ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट, राइट? सो अभी 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 हम लोगों ने गिराल्डीन का भी क्वेश्चन किया था क्रिस्टोबल से कि हाउ गिराल्डीन इज अबडक्टेड, राइट, बाय मेन एंड देन शी इज टेकन, दैट्स व्हाई शी इज मीटिंग क्रिस्टोबल। क्रिस्टोबल का यू नो वी डन दिस, सो प्लीज मेक कनेक्शंस एंड यू विल बी एबल टू सी दैट यू नो योर पावर टू रिमेंबर बिकम्स बेटर, क्योंकि आप ऐसे 3.5-4 घंटे जब हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं, डबल उसका अगर आप रिविजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टडिंग फॉर 8.5 hours in a row, and that is actually more than enough. And you know with us you're actually studying more also because आपका paper 1 भी आ जाता है. So you know this is actually more than enough, and trust your brain as well, it will be able to recollect those things all together. Okay, ये बहुत ही simple question है. I don't want anybody to go wrong with. Which of the following journals is dedicated to the field of cultural studies? अब देखिए cultural studies में भी आपका जो जून बैच होगा उसमें हम popular fiction पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको popular fiction ही नहीं पढ़ाया गया है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे what is massification, what is mass culture, what is popular culture, what is cultural studies. तो एक जो चीज हम लोगों ने काफी नई नई चीजें जून बैच के अंदर डाली हैं, उसके बारे में of course we'll be talking about it as well. Topaya is absolutely the right answer. Topaya is absolutely the right answer. Topaya becomes the correct answer. Excellent. Okay, which of the following books carried additional titles? Sermon on the Sea, Sermon on the Sea, Sermon on the Sea. जल्दी बताइए, Sermon on the Sea. Remember my name is written on sea. We just talked about my name is written on water. John Keats का जो epitaph था अभी हम लोगों ने इसको करा भी था अभी क्लास के अंदर. What is the correct answer here? Absolutely right, absolutely right, absolutely right. This is Hind Swaraj or Home Rule by Gandhi, right? Hind Swaraj or Home Rule, Hind Swaraj or Home Rule जो है by Gandhi, this is absolutely the right answer. ठीक है, गांधी ने जब तक ये पेन डाउन किया था he was already convinced that violence was not the Indian way of fighting. Now इसको कंपेयर करो हेनरी डेविड थारो से. थारो क्या कर रहे हैं? थारो is also talking about it. Thoreau is also discussing this in Civil Disobedience. So Thoreau, who's also a member of the American Renaissance movement, he's the same writer who's writing Walden, right? He's the same writer who's writing Walden. तो आप देख पा रहे हो, he's also talking about non-violence. So you'll have to keep that in mind. इसको बिल्कुल भी don't get it wrong. Okay. All right. This is very simple a question. This is very simple a question. In which of the following essays did Charles Lamb first use the pseudonym persona Elia? Charles Lamb ने सबसे पहले use किया था Elia का. Right? In which of the following, in which of the following he was using the pseudonym of Elia? What is the correct answer here?
साउथ सी हाउस, ओके, सो साउथ सी हाउस के अंदर, ठीक है, साउथ सी हाउस के अंदर ही वाज एक्चुअली यूजिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और चिमनी स्वीपर्स इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, प्लीज रिमेंबर दैट. ऑगरीज ऑफ इनोसेंस हम लोग विलियम ब्लेक का डिस्कस भी कर रहे थे, विलियम ब्लेक भी चिमनी स्वीपर्स का लिखते हैं. सो साउथ सी हाउस इज द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. कितने प्लेस ऑफ शेक्सपियर लिखते हैं ये? 20 प्लेस ऑफ शेक्सपियर को टेल्स ऑफ शेक्सपियर में चार्ल्स एंड मैरी लैम्प ने साथ में किया है. सो कीप ऑन रिवाइजिंग दैट आल्सो. He that is not with us is against us. He that is not against us is with us. This is so true also indirectly or is wrong. Who said these lines? Okay. Who said these lines? And these are coming from an essay called Of Unity in Religion. Of Unity in Religion. Of Unity in Religion. कौन लिख रहा है? Very good, very good. Bacon is the right answer. Who's the one who's writing this? This is Francis Bacon that we're talking about. ये कौन है? This is Francis Bacon that we're talking about. So Francis Bacon is the one. किस पे बोल रहे हैं? Of unity in religion. Of unity in religion. Of unity in religion. This is coming from the English philosopher Francis Bacon. Francis Bacon इसके बारे में लिख रहे हैं. So please keep that in mind. Okay, please remember that also. Okay, moving on to the next question. Let's just quickly answer this. The Romantic period produced a fair amount of dramatic criticism. A notable example is On Knocking at the Gate in Macbeth. On Knocking at the Gate in Macbeth. ये कौन लिख रहा है? On Knocking at the Gate in Macbeth. So again, romantic prose writings आपकी, women writings आपकी, right? आपका romantic prose writers हो गए, आपकी women writings हो गई, ये सब important concepts हैं जो आपको cover करने ही पड़ेंगे. Women writings हो गई आपकी, you'll have to cover all of these. Thomas De Quincey is absolutely the right answer. Thomas De Quincey is absolutely the right answer over here. On Knocking at the Gate in Macbeth जो है, this is coming in. Alright, and please याद रखना, this was a forerunner of psychological criticism. Psychological criticism को सबसे पहली बार ये देख रहा है. That is what you will have to keep in mind. Okay, it is scrutinizing. ये question भी आ चुका है, कौन से पार्ट को ये scrutinize कर रहा है? To scene 3 को scrutinize कर रहा है. The murder of King Duncan is taking place on the hands of Macbeth and Lady Macbeth, right? Following the knock on the gate of the castle. तो ये question भी आपका popularly आया हुआ है. It's a precursor to psychological criticism as well as De Quincey's essay on knocking at the gate at Macbeth. This is taking Act 2 Scene 3 का scene. Okay, so please यहाँ पे याद रखना. Knocking किसने की है? ये भी question आ चुका है. Macduff and Lennox, right? So ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. You'll have to keep it in mind. Okay, please read this. What Dr. Johnson actually faults here is, what is he faulting here is, अभी हम लोगों ने देखा भी था. So Drummond is talking about it, Dryden is talking about it, you know, there are other writers also who are discussing about your metaphysical poets, but of course Dr. Samuel Johnson is coming in. What is the correct answer? Okay, excellent, excellent, excellent. These people are having the tendency to saunter away. ये कहीं ना कहीं भटक जाते हैं. टॉपिक कुछ और हो रहा होता है, बोल कुछ और रहे होते हैं. So what are you able to see that there is a tendency to saunter away? There is a tendency to saunter away, right? So this is his view. This is what he views altogether. सबसे पहला person कौन था? जॉनसन भी metaphysical poets की इतनी तारीफ नहीं कर रहे हैं. But सबसे पहला poet कौन था? Who was at least praising the metaphysical poets? That's Grierson. तो सबसे पहला person कौन आ जाता है? Who was at least praising them? That is Grierson. Grierson is the person who's actually praising them. And उसके बाद Eliot also gets influenced and praises metaphysical poets. Otherwise तो उनको negative light में ही दिखाया जा रहा था. Okay, so please keep that in mind. Okay, this is a very simple question. This is a fairly simple question. In the creation of the semantic triangle, which of the following theorists collaborated with I.A. Richards? Who collaborated with I.A. Richards? किसने collaborate किया था? Oh my God, Aziz, your health was not good. Please take care. Who collaborated with I.A. Richards? Who collaborated? It's Charles K. Ogden. Charles K. Ogden. Very good. So यहाँ पर semantic triangle जो है, the meaning of meaning में आ रहा है, जो कि Ogden and Richards दोनों लिख रहे हैं. ठीक है, they are actually trying to talk about. So आपका symbol, आपका referent, आपका reference, ये सब important हो जाता है. आप जो लिख रहे हो दैट इज अ सिंबल. आप जो लिख रहे हो दैट इज अ सिंबल. ठीक है, आप किसको रेफरेंट मान रहे हो एंड हु इज द रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द मीनिंग. दिस इज योर सिमेंटिक ट्रायंगल. मीनिंग ऑफ मीनिंग में आता है. ये हम लोगों ने क्लासरूम क्लास में भी अभी हाल ही में डिस्कस किया था नॉन फिक्शनल प्रोज राइटिंग्स के वर्क में. विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म फीड फॉरवर्ड?
फीड फॉरवर्ड रादर देन फीडबैक क्या होता था, आप बता रहे हो आपने क्या गलत किया है, फीड फॉरवर्ड है आप बताओ कि क्या आप सही कर सकते हो, ये आपने परफॉर्मेंस दे दिया है अब आप क्या सही कर सकते हो, दैट इज योर फीड फॉरवर्ड, दैट इज योर फीड फॉरवर्ड. ओके, so please tell us what is the correct answer. Absolutely right, this is IA Richards, right? IA Richards is coining this particular term. मार्शल मकलूहन क्या कहते हैं, मीडियम इज मैसेज. व्हाट इज मार्शल मकलूहन टॉकिंग, सो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है. ही सेज मीडियम इज द मैसेज, medium is the message according to Marshall McLuhan, medium is the message, that is what you are able to see. और ये कौन बोल रहा है, आइए रिचर्ड्स बोल रहा है. सो फीड फॉरवर्ड कहां से आ रहा है, आइए रिचर्ड्स से फीड फॉरवर्ड आ रहा है. ठीक है, मीनिंग ऑफ मीनिंग भी ओड्रिन और रिचर्ड्स लिख रहे हैं. So ये आप अपनी न्यू क्रिटिसिज्म, दिस व्हाट आई वाज टेलिंग द क्लासरूम स्टूडेंट्स आल्सो, न्यू क्रिटिसिज्म के नोट्स पे आप इसको दोबारा से जाके लिख के स्टेपल कर लेना. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट. All right, moving on to the next question. In his practical criticism, I.A. Richards suggests that there are several kinds of meaning, that the total meaning is a blend of contributory meanings which are different types. He identifies 4 types of meaning. Quickly tell us what is the correct answer. Quickly tell us what is the correct answer over here. What are the 4 types of meaning that he talks about? Just give me 1 second. What are the 4 types of meanings that he's discussing? I'm just hiding myself for a second. What are the 4 types of meanings that we're able to see? Yes. What are the 4 types of meaning that we're able to look at? Jaldi bataiye, what becomes the correct answer that you're able to see? Okay, excellent, excellent. That is the right answer. That is the right answer. So your sense, feeling, tone and intention. Sense, feeling, tone and intention. This becomes the correct answer. Okay. So please इसको याद रखना. So what is happening? ये scientific precision लेके आ रहे हैं. कल जैसे हम लोग क्लास में जब लॉन्गाइनस कर रहे थे, हॉरस कर रहे थे, क्लासिकल राइटर्स भी चाहते हैं कि डेकोरम आए, बेंचमार्क आए. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो एक साइंटिफिक प्रिसिशन लाने के लिए, एक ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए ही सेज, और ये हम लोगों ने करा भी था अभी रिसेंटली जब पिछले हफ्ते क्लासरूम क्लास में भी टॉक्ड अबाउट यूसेज ऑफ लैंग्वेज, रेफरेंशियल, इमोटिव. आप इमोशंस को भी दर्शाना चाहते हो, जैसे अभी अजीज कहता आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो पूजा वाज आस्किंग हाउ यू फीलिंग, राइट? सो इट इज लैंग्वेज इज आल्सो सर्विंग एन इमोटिव फंक्शन. आप बता रहे हो भाई आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम स्कैर्ड, एग्जाम इज ऑन 6 and on 2nd December I've actually fallen sick. तो ये आप क्या कर रहे हो, you're using language to also share your emotions altogether. तो please remember this is what he talks about altogether. तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है. तो 4 factors जो आपकी sense, feeling, tone and intention, very important. आपका टोन कैसा होगा, अगर आप कह रहे हो ओके तुम ठीक हो जाओगे, दैट शोज अ लिटिल बिट ऑफ एम्पैथी, हाँ हाँ ठीक है तुम ठीक हो जाओगे. तो टोन आल्सो ये थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग टोन हो जाता है. तो टोन आल्सो डिटरमिन्स द इंटेंशन दैट यू आर हैविंग, राइट? सो आपको ये याद रखना है. एंड आप लोग तो लिटरेचर स्टूडेंट्स ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, दोस्तोयेव्स्की, रास्कलनिकोव, आपका लॉ क्या कहता है, या वदरिंग हाइट्स, हीथक्लिफ इज एक्चुअली अ क्लियर कट केस हु नोज लॉ रियली वेल. आपका लॉ क्या कहता है, दैट इन केस ऑफ इंटेंशन इज नॉट देयर देन यू आर नॉट कल्पेबल. कल्पेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, तो सेम चीज जब आप बोल रहे होते हो ये भी आ जाता है. ओके, so that is what you will have to keep in mind. Okay, moving on to the next question very quickly. When was I.A. Richards' The Philosophy of Rhetoric published? The Philosophy of Rhetoric कब आया था? When was the Philosophy of Rhetoric coming in? Philosophy of Rhetoric very important. The study of misunderstanding and remedies जो है, हम लोग कैसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उसकी क्या क्या रेमेडीज हैं. वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट. मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, राइट? एंड 1936 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, राइट? यहाँ पे आपका क्या सही जवाब हो जाता है, यहाँ पर 1936 becomes the correct answer. 1936 is absolutely the right answer. So please remember, Richard is defining, he's trying to define, he tries to talk about it. मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हैं, हाउ कैन यू करेक्ट द मिसअंडरस्टैंडिंग. हर एक एप्टीट्यूड एग्जाम में, जैसे आपका पेपर 1 में नहीं आता है, पर हर एक एप्टीट्यूड एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन होता है, क्योंकि हम सेंटेंस को गलत अगर लिखते हैं, स्मॉल लिटिल चीजें जो हम गलत कर देते हैं, उससे पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, right? So that is what you will have to remember over here. Which among the following defines poem as the artist's experience? Poem जो है एक artist का experience है. Where are we able to see this? Where are we able to see this? Where are we able to see this again? Where are we able to see this again? थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा. Where are we able to see this again?
the artist's experience, right? Intrinsic criticism. ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, प्लीज याद रखिएगा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म, ठीक है? एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म आपका कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड हो जाता है, दिस इज इंट्रिंसिक क्रिटिसिज्म, दिस इज आई ए रिचर्ड्स, ठीक है? दिस इज आई ए रिचर्ड्स। वही मैं आपको बता रही थी, फेमिनिज्म हो गया, आपका न्यू क्रिटिसिज्म हो गया, फॉर्मलिज्म हो गया, इनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, you will have to remember that. So what are we able to see? That the poem is the artist's experience. That is what you are able to see, that I.A. Richard talks about. I.A. Richards इसके बारे में बोल रहे हैं. He is the one who's talking about it. Okay. So please keep that in mind. Which one of the following statements by Roman Jakobson is true about metaphor and metonymy? Roman Jakobson का पूरा understanding of metaphor and metonymy. So Jakobson जो बोल रहे हैं about metaphor and metonymy. What is correct? What is correct? What is it that you are able to see? Which is correct? इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है about metaphor as well as metonymy? Metaphor और metonymy के बारे में which of the following is actually correct? Which of the following is actually correct? जल्दी से बताइए. Okay, very good, very good. That is the right answer. That is the right answer. So metaphor क्या कर रहा है? What is basically a metaphor doing? Metaphor is alien to the similarity or disorder. Metonymy is the continuity of disorder. ठीक है? So metaphor एक तरह से comparison कर रहा है, right? It's trying to tell you the similarity, whereas metonymy is the continuity of the disorder that you're able to see. Metonymy, synecdoche, part of the whole. Metonymy, something is getting replaced altogether. So these are all metaphors, types of comparisons that we are able to see. Okay, so please keep that in mind that this is what you're able to see. So रोमन जैकब्सन ने कौन सा ऐसे लिखा था, इसको आप ठीक से लिख लीजिए, इसको आप ठीक से लिख लीजिए. What is the name of the essay that Roman Jacobson is writing? It's called Two Aspects, Language and Two Types of Aphoristic Discourses, right? So this is what the essay is. So language and two types, right? यहाँ पे language and two types of aphastic disturbances, right? That is what he is talking about. That is what he is talking about, your aphastic disturbances, right? This is what he is primarily discussing. और ये बताते हैं कि कैसे आपका मेटाफर एंड मेटोनमी जो है ये टू डिफरेंट टाइप्स हैं. मेटाफर एंड मेटोनमी जो है ये टू डिफरेंट टाइप्स हैं. ओके, like I told you at the very beginning, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, I want to keep it a little lighter today. I don't want to extend it completely because I really want all of you to also prepare your own notes, understand your own notes, try to go back and revisit your own notes. Monday को आपका एक महा मैराथन होगा. So Monday को we will be having a sort of a marathon. Tuesday को I know because it's going to be a little closer to the exam time, so it will be a little easy peasy. But Monday को जो आपका 10:30 PM पे, Monday को day after tomorrow when I'm meeting you, it'll be a Maha Marathon. So please don't forget to join in, don't forget to tune in all together. Tuesday also we'll be meeting at 10:30, and Wednesday I think I'll probably see you when you're going to be giving the exam itself. Fine. Okay, in case if there are any other doubts, in case if there are any other problems that all of you are having, please feel free to let us know about it. ठीक है? Please feel free to let us know about it. अच्छी तरह से इसको cover कर लेना. Properly, अच्छी तरह से make sure कीजिएगा that you're revising whatever you have done. Alright? Classroom students, of course, I'll see you tomorrow at 11 o'clock. आप लोगों का homework आपको पता है, आपको poetry को अच्छी तरह से revise करना है. British, Indian, and American poetry before you come for the class at 11 a.m. and at 1:30 p.m. 1 o'clock. Fine. I'll catch up with all of you. All right. Take good care of yourselves. Wow. So imagine your centers in Noida. Let's just hope that we're able to meet you all is well. Okay, that's great. That's great. Okay. Okay. All right. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much. All right, Dominator, Zamar, Pooja, thank you so much, Pooja. Thank you so much, everyone. Take good care of yourselves. And अगर कोई भी और issue हो, so please do keep us posted. Be very motivated. It's all a mind game also from now. Fine. I'll catch up with all of you day after for the Maha Marathon. And classroom students, I'll see you tomorrow at 11 and 1 o'clock. Fine. Take good care of yourselves. In case अगर कोई भी और issue हो, तो do keep me posted. All right. Good night, everyone. Thanks, Vishal. Aziz, wishing you a speedy recovery. Rishikesh, Devashish, Pragya. Oh wow. Shanbaga. Okay, weather forecast. That's scary. Himanshi, but I'm sure it's gonna be. I'm sure it's gonna be fine. Himanshi, thank you so much, everyone. Take good care. Take care. Bye.